सकते हैं, दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग। ट्राई कीजिए, दिस इज प्योर लॉजिकल, इसमें तो कुछ ऐसा ये नहीं, कंप्लीटली लॉजिकल। एक बार और ट्राई कर लीजिए, या तो A1 A2 स्पॉट हो जाते हैं, ABC कर लीजिए आप। 153, 51 into 3, why 51 into 3 यार? कैन यू एक्सप्लेन योर आंसर? ओके तारीख। फिफ्टी वन अमीनो एसिड्स इन पेप्टाइड, नो, ट्राई पेप्टाइड बोला ना। ट्राई पेप्टाइड मतलब क्या होगा? पेप्टाइड में 51 नहीं होता, सबसे पहले चीज समझ लीजिए, पेप्टाइड में देर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन पेप्टाइड। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज दैट कि पेप्टाइड में 51 ऐसा कुछ कंपलसरी है। पेप्टाइड डाई पेप्टाइड भी होता है, दो का। ट्राई पेप्टाइड, राइट, टेट्रा पेप्टाइड, चार का। सो यू हैव ट्राई पेप्टाइड, दैट मींस यू विल बी हैविंग 3 amino acids only. Make sense? Yes or no? Please tell me. Yeah. जी, तो यहाँ पे देखिए अमीनो एसिड्स में व्हेन वी स्टार्ट अटैचिंग मॉलिक्यूल्स ना, तो हम ऐसे, आपको पता है सी टर्मिनल एंड एन टर्मिनल, आर यू अवेयर ऑफ दिस कंसेप्ट, सी टर्मिनल एंड एन टर्मिनल? ठीक है, yes. काम करते हैं, एक सिंपल सा अमीनो एसिड लेते हैं, फिर उसके बाद आपको समझाते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए, लेट अस सपोज यू आर हैविंग कार्बन एटम जिसमें COH है, एंड द सेम कार्बन एटम इज हैविंग NH2, एक इसमें हाइड्रोजन होगा, एंड देन वी विल बी हैविंग, लेट्स, आई एम अटैचिंग A फॉर A, और फिर इसी तरह से आपके पास B। Now tell me guys, what is the peptide bond? What is the peptide bond? किसके बीच में होता है peptide bond? नहीं चलेगा, देखिए आसान है। फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग, दीज आर दी हाइड्रोजन्स, तो यहाँ पे क्या होगा, पानी निकलेगा, सो यू विल हैव CONH, राइट, सो दिस विल बी फॉर्मिंग अ बॉन्ड, एंड सेम यहाँ से भी इस तरह से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, एंड यू विल बी फॉर्मिंग अ बॉन्ड, उसी को पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो वंस यू फॉर्म द पेप्टाइड बॉन्ड, द मॉलिक्यूल विल लुक समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे आपके पास एन टर्मिनल है, NH2 बच गया यहाँ पे, एंड देन यू आर हैविंग कार्बन एटम, कार्बन में लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O, एंड दिस कार्बन इज देन अटैच्ड टू दिस नाइट्रोजन एटम, देन नाइट्रोजन के बाद फिर से कार्बन, यहाँ पे A था, यहाँ पे B आ गया, ठीक है, एंड दिस नाइट्रोजन इज हैविंग वन हाइड्रोजन आल्सो, देन आफ्टर B this carbon atom is connected to again C double bond O, then you are going to have again NH, then again you are going to have C, और यहाँ पे COOH। so as you can see right now हम A का
the N terminal of A is free and C का कौन सा टर्मिनल फ्री है? C टर्मिनल, दैट मींस कार्बोक्सिलिक एसिड को में C होता है, दैट्स व्हाई C टर्मिनल गैस का कार्बन टर्मिनल एंड दिस इज नाइट्रोजन। तो इस तरह से हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल? तो देखिए सबसे पहले तो एक बार हम ABC कर सकते हैं इस तरह से, देन व्हाट वी कैन डू, आप B और C को चेंज कर दीजिए, A C B। अभी भी हम लोग सिर्फ क्या किए हैं, वी हैव जस्ट चेंज व्हाट, ए का एन टर्मिनल, ठीक है। अब इसको बी करते हैं, बी के साथ ए सी और बी के साथ सी ए, बोथ ऑफ दीज विल बी डिफरेंट, व्हाई? बिकॉज वी आर यूजिंग द बी टर्मिनल विद द नाइट्रोजन ऑफ, वी हैव द बी एट एन टर्मिनल और सी एट द सी टर्मिनल। उसके बाद फिर आप सी ले लीजिए, सी के साथ ए बी और सी के साथ बी ए। So these are what 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now there is no other combination that we can do जो इसी के सेम नहीं होगा। And also you can do this by a very simple permutation type of thing, कि तीन आपके पास यहाँ पे बॉक्सेस हैं, यहाँ पे आप तीनों के तीनों को डाल सकते हैं। Here you have choice of 2 and here you have choice of 1. So ये 3 factorial केस में 3 into 2 into 1 that will be equal to 6. तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। So the number of tripeptide formed by 3 different amino acids using each amino acid once, it is what is 6. Does this make sense? Yes or no? Please tell me. अभी ए जो है आपके पास किसमें, इट इज इन एन टर्मिनल और ये सी टर्मिनल में। अभी एन टर्मिनल ये सी टर्मिनल में, अभी बी एन टर्मिनल में और सी सी टर्मिनल में, बी एन टर्मिनल में है और सी ए सी टर्मिनल में, इस तरह से, ठीक है। सो प्लीज कॉपी दिस डाउन। बेसिकली इस पे याद रखिए आप, इफ यू आर हैविंग ट्राइपेप्टाइड तो 3 फैक्टोरियल, इफ यू आर हैविंग टेट्रा 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। So, I will just give you 1 minute for this. 1 minute is going to be enough. The time is up. Actually, try this one. The total number of correct statements. Okay, Shahid.
Tarif, take 1 more minute for this. Let us see. First statement, RNA is regarded as the reserve of genetic information. क्या ख्याल है guys, true or false? RNA के पास होता है क्या genetic information? आई होप इतना पता होगा आपको that this is false. RNA के पास नहीं होता है, DNA के पास होता है. DNA molecules self duplicate during cell division. Yes, that's how the information is passed because it is going to self duplicate itself. So this is true. DNA synthesizes proteins in the cell. नहीं, DNA के पास इंफॉर्मेशन होता है कि कैसा प्रोटीन बनेगा, है ना? डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होता है कि जो प्रोटीन बने, फॉर एग्जांपल हेयर इज आल्सो प्रोटीन, तो डीएनए डिसाइड करेगा whether it will be curly or it will be straight. So this is also what it does not synthesizes, but it has synthesize नहीं करता, मशीन नहीं है वो. This is false. The message of the message for synthesis of particular protein is present in DNA. This is true. Identical DNA strands are transferred to daughter cells. ये बताइए आपको. डॉटर का मतलब क्या है यहाँ पे? डॉटर का मतलब ये मत समझिएगा बेटी, ठीक है ना? डॉटर सन डॉटर वाला नहीं है. डॉटर का मतलब आफ्टर द डिवीजन यू हैव टू डीएनए स्ट्रैंड्स, उसके बारे में. दिस इज आल्सो ट्रू. ठीक है, तो हमने ट्रू 3. ठीक है, चलिए मूविंग ऑन. Now this is purely on the basis of a fact. If you remember these, if you know these molecules, then it will be fine. If you don't know these molecules, not the answer. इसमें तुक्का नहीं लगाइएगा आप लोग, ठीक है? कंफर्म हो तभी बताइए. चलिए इसके लिए 1 मिनट ले लीजिए, अगर आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो कुछ छोड़. चाहे में सब, तो चलिए हम आपको बता देते हैं. फ्यूरान. फ्यूरान में आपके पास ऑक्सीजन रिंग होता है और हेट्रोसाइकिल है, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है इसका. ठीक है. थायोफीन में यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाएगा. तो यहाँ पे एक थायोफीन हो गया. पेरिडीन आई होप आप लोग को पता हो, पेरिडीन में नाइट्रोजन होता है, पायरुल में पे नाइट्रोजन होता है. अब उसके बाद सिस्टीन है. सिस्टीन आप लोग को शायद पता होना चाहिए, सिस्टीन में होता है सल्फर. सिस्टीन की वजह से ना, लाइक कर्ली और स्ट्रेट हेयर का, लाइक अगर इफ देयर आर टू मेनी सिस्टीन मॉलिक्यूल्स इन द हेयर, तो वहां पे इट विल बी कर्ली, एंड अगर नहीं है तो फिर वहां पे नहीं होता. सो दीज आर दी ओनली टू, थायोफीन एंड सिस्टीन. इन दोनों में ही क्या होता है, sulfur as the heteroatom is present. There are two molecules. These are the two compounds जहाँ पे sulfur as a heteroatom होता है. ठीक है, but again ये आप कीजिए. This can be asked once again. It's one of the very generic questions.
If one strand of DNA has a sequence ATGCTTCA, the sequence of the bases in the complementary strand. ठीक है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो बॉन्ड होता है वो ATGC होता है, ATGC, ठीक है। वो and sometimes they can also ask the number of hydrogen bond that is present between 18 and AT and GC. तो GC के लिए याद रखिए, GC का फुल फॉर्म है ग्रुप चैट। How many percent do you need for a group chat? The least amount of percent that you need for group chat? Tell me, guys. जल्दी बोलो। At least how many percent do you need for a group? Maria, Maria, tell me. At Yes, least sir. how many at least how many percent do you need for a group chat? Maria, मदिहा बताएंगे। मदिहा, जीसी का मतलब ग्रुप चैट नहीं होता, मतलब जीसी को याद रखने के लिए कह रहे थे जी। मदिहा, Yes, sir. 3. how many? 3 करेक्ट। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है, और 80 में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो दे कैन आस्क दिस आल्सो दैट 80 और GC में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड, बट दिस क्वेश्चन इज नॉट अबाउट दैट। एडमिशन इसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है सिस्टोप्रोपान और गुआनिन का होता है साइटिस, ठीक है। तो ATGC इसको कीजिए जरा। कैंसर आया है शायद, ठीक है, चलिए देखते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट टी है, जी का कॉम्प्लीमेंट सी है, सी का कॉम्प्लीमेंट जी है, टी का कॉम्प्लीमेंट ए है ना। तो पहली बार जो लोग सवाल करते हैं उनके लिए 2 मिनट। रैंडम लेटर्स नहीं है, अच्छा चलिए ठीक है, हम बता देते हैं आपको। रैंडम लेटर्स नहीं है। बायोमोलिक्यूल्स थोड़ा सा पढ़ के आते हैं ना यार, मतलब ऐसे भी ब्लैंक नहीं बैठना चाहिए। Those who are trying, 30 more seconds. Never studied this in biomolecules. Biomolecules में आपने DNA RNA DNA पढ़ा है याद? तो क्या पढ़ा फिर आपने बायोमोलिक्यूल्स में? आपने आई थिंक सिर्फ वो कार्बोहाइड्रेट तक ही पढ़ा होगा, फिर आपने छोड़ दिया होगा। आपको लग रहा होगा बायो ये तो मजा नहीं आ रहा है। बस वही पढ़ा आपने, ग्लूकोज, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स, ये सारी चीजें याद है? डीएनए नहीं याद है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, दीज थिंग्स, नाइट्रोजनस बेसेस, ये याद है? नहीं, ठीक है, बहुत चलिए ठीक है। तो याद, अगर आप याद नहीं तो एक क्या ही याद हो पाएगा, तो ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल ध्यान से। इफ यू हैव दिस सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, what's the difference between them and their properties? अच्छा ठीक है। अच्छा, you have heard this word adenine, guanine, then cytosine and thymine.
तो देखिए न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसमें यू हैव बेसेस ना, थाइमीन यू, तो ये सारे भी दीज ऑल आर नाइट्रोजनस बेस। न्यूक्लियोटाइड में व्हाट डू यू हैव? न्यूक्लियोटाइड यू हैव शुगर, पेंटोज शुगर, प्लस you have nitrogenous base, plus you have the PO4 3 negative whatever, right? So this is nitrogenous base ना, these are nitrogenous base। अब ध्यान रखिए क्या याद रखना है आपको, if you have the similar type of question that can be asked, these sequence can be different। so please see, A का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? T है। so wherever you have, we have A T C C T D C A, A का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? T। तो क्या जाएगा? T का कॉम्प्लीमेंट्री C, C T का A C का G और A का T। तो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री, सो दैट्स कॉम्प्लीमेंट्री। C T A C G T A, ये तो यहीं से स्टार्ट कर, तो वी विल करेक्ट, बाकी किसी नहीं। मतलब पहले ही इसमें आपको जाएगा that B is going to be correct because T कहीं है ही नहीं except in the B case। कैसे करना समझ में आया? याद टेल मी। Yes, sir. Okay, what about others? I think बाकी लोगों को पता था। I hope you knew about this GTGC वगैरह, कुछ याद है कि नहीं, भूल गए? Yes. Yes, Madiha। Yes. Now, this is one of the most important part even in the board examination। Board में there is not a year in which question from this particular topic has not been asked। If it can be asked in 1 marks MCQs में, if it 2 marks and 3 marks में कहीं, लेकिन it is always there। That is the reaction of glucose। Reaction of glucose। What option? पहले ही आप सही बताते हैं अगर, then you will get the option। मतलब बस A का बता दीजिए, सी का बता दीजिए तो भी चलेगा। हाँ, सी में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ए का बता दीजिएगा तो क्या क्या कुछ निकल। guys 2 minutes। याद नहीं, बस आंसर दिया है। तो आई थिंक काफी आसान है ये तो, मतलब थोड़ा भी टफ नहीं है। यस मारिया, करेक्ट, वेरी गुड। टेक 1 more minute। चलो, वन दैट मिनट इज स्टिल गोइंग ऑन, 30 more seconds। जी हाँ, देखिए सबसे पहले तो आपके पास NaHCO3 है, ठीक है, वेरी माइल्ड बेस। This does not react with glucose, कोई रिएक्शन ही नहीं है। All of the other parts you may have seen। HNO3 का भी आपको थोड़ा सा याद रखना, HNO3 तो कहीं था, HI भी कहीं था, है ना, ब्रोमीन वाटर के साथ भी कहीं तो था, ठीक है, बट ग्लूकोज विद NaHCO3 तो कहीं नहीं था, ठीक है। तो ग्लूकोज नो रिएक्शन।
ये ऑप्शन विल बी गुड, सो आगे आपको कुछ देखना भी नहीं। यू गो टू द सेकंड पार्ट, ग्लूकोज और HNO3 है, ग्लूकोज और HNO3 से आपको क्या मिलेगा, यू विल, मतलब पूरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वंस इट इज ऑक्सीडाइज देन व्हाट यू विल गेट सैकरिक एसिड, राइट, एसिड मिलेगा आपको। उसी तरह से HI के साथ आपको क्या मिलेगा, एनहेक्सेन मिलेगा, इतनी में आपका आंसर आ जाता है। या फिर इवन इफ यू गो फर्दर, ग्लूकोज और ब्रोमीन वाटर, ग्लूकोनिक एसिड, because पहला ही, आई मीन द फर्स्ट रिएक्शन इटसेल्फ इट इज, क्या क्या आप लोगों को नहीं देखने की जरूरत है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है ना, ऑल ऑफ दीज रिएक्शंस कर लीजिए इसको नोट डाउन। नो रिएक्शन, glucose with HNO3 it is going to give saccharic acid, glucose with HI it is going to give you N-hexane, glucose with bromine water it is going to give you gluconic acid. Please note this down. I hope you have written this down. Right, next. ये भी हार्ड नहीं है, आई मीन यू हैव बीन गिवन अ पॉलीमर, उसका मोनोमर बताना है आपको। एटलीस्ट आप लोग इसका तो बता देंगे ना, न्यूक्लियोटाइड और अमीनो एसिड, इस दोनों में मे भी आप कंफ्यूज है, न्यूक्लियोटाइड और अमीनो एसिड तो बता सकते हैं। करेक्ट मानिए। This is completely fact based, but still because it is match the following, उसकी वजह से आसान हो गया थोड़ा। If they only ask you ना like alpha glucose किसका है, or if they ask what is beta glucose किसका है, तो it would have been a bit difficult। तब वो completely fact based हो जाता है, यहाँ पे फिर भी आप थोड़ा सा कुछ आंसर दे सकते हैं। टेक वन मोर मिनट।
बताएंगे सर फिर सी। भाई इतना तो आना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड जो होगा न्यूक्लिक एसिड से होगा, अमीनो एसिड से, प्रोटीन में अमीनो एसिड्स होते हैं। सो वी आर हैविंग C1 एंड D4। सो C1 यहाँ पे है और D3 नहीं, C4 नहीं, C3 नहीं, C1 D4, ऑप्शन नंबर D। दैट्स इट। चलिए वो भी बात। टाइप ऑफ अमीनो एसिड ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन। बेसिकली ये क्या पूछना चाह रहे हैं पता है, कि प्रोटीन्स का मोनोमर क्या होता है। व्हाट इज द मोनोमर ऑफ प्रोटीन। अमीनो एसिड होता है, बट व्हाट टाइप ऑफ अमीनो एसिड, गामा, बीटा, अल्फा या डेल्टा। जिन लोगों को पता नहीं वैसे मतलब व्हाट आर दीस अल्फा बीटा गामा, तो उसको बता देते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ यू हैव COOH हियर, तो इस कार्बन पे NH2 नहीं लगती, इस कार्बन पे NH2 लगता है। दिस इज अल्फा कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड इज द फंक्शनल ग्रुप, या अल्फा कार्बन, आर लगा देते हैं। आर ग्रुप इज हियर कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा। उसी तरह से मान लीजिए यू हैव COH, हियर यू हैव R, ये इसको बोलते हैं बीटा अमीनो एसिड। ठीक है, बिकॉज द बीटा कार्बन इज हैविंग NH2। ये अल्फा हो गया, बीटा, और फिर ये गामा हो गया। गामा में NH2 का क्या रहेगा, व्हाट, गामा अमीनो एसिड। ठीक है, बट यू नो दैट द प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। ठीक है, अल्फा अमीनो एसिड्स नेचुरली अकरिंग, उसी की पॉलीमर को बोलते हैं प्रोटीन। ठीक है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, है ना, अल्फा अमीनो एसिड। चलो मूविंग ऑन। ये बताइए जरा, दिस इज ऑन समथिंग वेरी मच बेसिक बेस्ड ऑन CRT। Which structure of protein remains intact after coagulation of egg white on boiling? That is correct. Primary is going to be C. What is primary, secondary, tertiary, and quaternary? इसमें लीजिए जरा, primary, it is the sequence of amino acid, है ना, it is the sequence of amino acid। ठीक, ग्लाइसिन है, फिर उसके बाद सिस्टीन है, उसको क्या है, वो उसको बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी। ए अमीनो एसिड 1 is bonded to amino acid 2, is bonded to amino acid 3, is bonded to amino acid 4, all of these are what, this is primary information। secondary information जो होती है, secondary is either it is going to be alpha helix, या तो हेलिकल स्ट्रक्चर में होगा दिस अमीनो एसिड, और इट विल बी इन बीटा प्लीटेड शीट्स, बीटा शीट्स, दे विल बी लाइक दिस, इस तरह से हो शीट्स, है ना, एंड हेलिक्सेस आर लाइक दिस, इस तरह से हेलिक्स होता है। ठीक है, नाउ दिस इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सो ऑब्वियसली ऑल ऑफ दी सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया। टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होता है, ईच एंड एवरी प्रोटीन इट इज मेड अप ऑफ सम अमीनो एसिड, दे अमीनो एसिड, दोस अमीनो एसिड दे हैव सर्टेन सीक्वेंस, वो प्राइमरी हो गया। उस सीक्वेंस से कुछ अल्फा हेलिक्स, कुछ बीटा शीट, तो सेकेंडरी हो गया। नाउ दैट प्रोटीन विल हैव अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट, तो उसको बोलते हैं, वो आपके क्या बनता है, फिर टर्शरी स्ट्रक्चर बन जाता है। सो नाउ टर्शरी,
अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट दोनों मिलकर क्या बना, इंटरशेरिंग। उसके बाद फिर क्या होगा, these alpha helix and beta sheet they will give rise to multiple proteins, like चार आपके पास अलग अलग प्रोटीन आगे, they will give rise to quaternary structure। ठीक है, तो quaternary हो जाता है, जिससे फिर पता लगता है it's going to be globular protein और it is going to be fibrous। globular protein जैसे मान लीजिए आपके पास हो गया इंसुलिन, फाइब्रस में आपके पास मसल जो होते हैं है ना, you have had non-veg chicken sometime, तो रेशा रेशा आपने देखा होगा, तो that is fibrous है ना। Similarly hair is also fibrous। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर इज गोइंग डिस्टर्ब बाय डीनेचुरेशन, हीटिंग वगैरह से कुछ चेंज करने से। चलिए मूविंग together by a linkage known as, this is also quite fair, I mean बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। यस, so take 1 more minute for this। इतना these things if you just read, कोई भी नोट्स अपने पढ़ेंगे ना तो आपको ये सारी चीजें दिख जाएंगी उसमें। ओके ठीक है, आई थिंक वी हैव गॉट मोस्ट ऑफ द आंसर्स, आई एम स्टॉपिंग द टाइमर राइट नाउ, आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट इज न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन करने के लिए क्या होता है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ठीक है, दिस इज फॉर न्यूक्लियोटाइड। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसके लिए होता है जरा बताइएगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, glycosidic linkage is for joining what together, glycosidic linkage, yes correct, two monosaccharides। Now disulfide linkage, it is present inside the proteins, in proteins, बेसिकली इसी से वो करली नेचर आता है बाहर, डाइसल्फाइड लिंकेज की वजह से। ठीक है, पेप्टाइड लिंकेज होता है, पेप्टाइड लिंकेज इज बिटवीन व्हाट, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, बिटवीन अमीनो एसिड्स इनसाइड द प्रोटीन। डाइसल्फाइड से दो प्रोटीन लिंक नहीं होते, आई मीन long chains of proteins are getting linked, but this is very weak bond, disulfide जो bond होता है it's very weak bond, strong bond नहीं होता बहुत ज्यादा। उसी वजह से तो आप देखिएगा जिसके कर्ली हेयर्स होते हैं, इफ यू हीट इट अ बिट ना, थोड़ा सा हीट करने से स्ट्रेट हो जाता है, राइट। स्ट्रेटनर में थोड़ा सा हीट यूज होता है, उससे फिर वो स्ट्रेट हो जाता है। सो दैट इज disulfide linkage। सो disulfide linkage can be broken by a small amount of heat, स्मॉल तो नहीं होता बट स्टिल by heating। चलिए मूविंग ऑन। नाउ व्हाट आई वांट यू गाइस टू सी, देखिए 2024, 2024, look at the level of question 2024। ठीक है, 2024, 24, 2024 and 20, this is also 20, like all of these questions now what I would say is that if you do a surface level of preparation of biomolecules also just by reading doing and able to do the maximum of these questions, I hope all will agree। but now look at the level at 2023। अब ये बताइए, this is completely factual, it's not like you have a topic in your NCERT textbook, chemical properties of arginine, the properties of जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, physical properties of alkane, physical properties of alurine, physical properties of alcohol phenol ethers ना, physical properties of aldehyde carboxylic acid, सबका पढ़ते हैं। but if we had something like that in the case of amino acid, it was a separate topic, then I would have said that this topic is what it is from easy, the मोटे topic में से है जो टर्म है, but it is not like that ना। अब यहाँ पे क्या ही आंसर करेंगे, तुक्का मारिए आप लोग।
थिंक अबाउट ईच पॉइंट, मतलब आपको कम से कम आर्जिनिन के बारे में नहीं पता है, बस इतना पता आर्जिनिन, आर्जिनिन क्या होता है बताइए जरा, व्हाट इज आर्जिनिन? इट इज अ अमीनो एसिड, राइट? अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड होता है, तो एटलीस्ट उसमें एक कार्बन एक नाइट्रोजन कम से कम, इफ यू डोंट नो दिस स्ट्रक्चर, एंड दिस कीपिंग इन माइंड दैट यू डोंट नो दिस स्ट्रक्चर, ठीक है ना? बट इट इज स्टिल गोइंग टू बी अ बिग मॉलिक्यूल बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा, एक कार्बन और दो कार्बन होंगे, NH2 ग्रुप भी होगा, देयर मे बी सम अदर कार्बन एटम्स आल्सो बिकॉज R ग्रुप एक अल्काइल ग्रुप भी होता है उसमें, ठीक है? सो इट इज आर्जिनिन, अमीनो एसिड है। नाउ इट हैज फेयरली हाई मेल्टिंग पॉइंट, हो सकता है ना, बिकॉज COOH है और NH2 है, बोथ आर एबल टू डू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई मीन आप इसको ऐसे क्रॉस हो ही नहीं सकता है, मतलब नॉन पोलर नहीं, इट इज पोलर मॉलिक्यूल, राइट? मेक सेंस? आपको थोड़ा सेंस समझ में आ रहा है? ये सुनो, थोड़ा साथ दीजिएगा जरा, मदीहा, तारीफ, शाहिद, याद, प्लीज टेल मी गाइस। आई कैन नॉट जस्ट ऑन द फेस वैल्यू, आई कैन नॉट eliminate this option. I mean, I cannot say that it is not correct. It has fairly high melting point, तो हम बस देख के नहीं बोल सकते कि हो सकता है इसका पहले, मतलब होगा ही, क्योंकि both of them carboxylic acid and NH2 both are present in amino acids and they are going to have hydrogen bond. Does this make sense? That this statement can be true, may be true, मतलब ज्यादा चांस क्या है इसके ट्रू होने? टेल मी गाइस, क्या ख्याल है? हाँ ना, कुछ तो बोले। नहीं समझ में आ रहा। मारिया, मदीहा, तारीफ, याद, शाहिद, नहीं समझ में आ रहा। दैट दिस स्टेटमेंट मे बी ट्रू, नहीं आ रहा समझ में लगता है। मारिया टेल मी। Yes, sir. लेकिन सर ठीक है। Next point is it is associated with more than one pKa value. This you cannot know if you don't know the structure. But still you cannot deny the statement because there are some certain amino acid आपने पढ़ा होगा, acidic होते हैं amino acidic amino acids are those which are having more than one carboxylic acid groups, and basic amino acids are those which are having more than one NH2 groups. So this may be true, हम इसको maybe की category में रखते हैं. If you look at the C statement, it has high solubility in benzene. Is non और I need answer, ये तो आप लोगों को पता होगा, बेंजीन पोलर होता है इन द चैट। तो बाय द वे इज माय वॉइस क्लियर और इज माय वॉइस लैग है क्या मेरे वॉइस में? इज देयर, आवाज नहीं आ रही क्या? मारिया टेल मी, इज देयर अ लैग इन माय वॉइस और इज इट क्लियर? Yes, sir. At times it's lagging, but now it's fine. So it's generally clear, but at times it is lagging. ठीक है, so what I'm saying is I'm asking benzene is non-polar or polar in the chat please. बेंजीन का स्ट्रक्चर बना के, तो अगर याद नहीं है ना तो फिर भी स्ट्रक्चर बना के तो आप पता कर सकते हैं ना, पोलर होगा नॉन पोलर होगा। इफ यू कैन सी एनी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा हो, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव कहीं पे आ रहा हो, या आपने आंसर किया है? आई एम वेटिंग फॉर अदर्स, मारिया, इरफान, मदीहा। ठीक है, बेंजीन में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसमें है ही नहीं, ऑल द कार्बन एटम्स आर sp2, सारे sp2 कार्बन एटम्स, so they will be pulling the electrons equally, so it is what it is, completely non polar। ठीक है यार, दिस इज कंप्लीटली नॉन पोलर। अब बताइए, वी आर हैविंग दिस इज नॉन पोलर और अमीनो एसिड इसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह है, ये तो बहुत पोलर है। सो कैन आई नॉट से दैट दिस स्टेटमेंट इट इज हाई हाई सॉल्युबिलिटी? क्या ख्याल है? डज दिस मेक सेंस? यस और नो, प्लीज टेल मी। सिंस बेंजीन इज नॉन पोलर, सॉल्युबिलिटी किसकी होती है? लाइक डिसॉल्व्स लाइक ना, पोलर विल डिसॉल्व पोलर, नॉन पोलर विल डिसॉल्व नॉन पोलर। दिस इज तो पोलर, पोलर के ऊपर से भी क्या है ये, पोलर से ऊपर, पोलर के ऊपर से भी इट इज हैविंग COH, एसिडिक है। ठीक है, it will become what, even more non soluble I would say। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी है, NH2 भी है, तो बेंजीन में बहुत ज्यादा नॉन सॉल्युबल हो जाएगा।
Does this make sense? Yes or no? Please tell me. Maria, Madiha, Tarif. तारीफ में आंसर किया था जी। शाहिद मेक सेंस? यस और नो? प्लीज टेल मी। थोड़ा बोलेंगे तब तो हम आगे बढ़ेंगे ना, नहीं तो फिर शाहिद मेक सेंस। मारिया? Yes, sir. यस मेक सेंस, ठीक। Now this is completely based on what? This is completely based on the factual information है ना। अगर आपको स्ट्रक्चर पता है फिर आप बता सकते हैं, अगर नहीं कंप्लीट आप नहीं बताइए। गिविंग यू 1 मिनट, अगर किसी को पता हो तो। होपफुली इस टाइप के सवाल मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएंगे इस साल, बिकॉज पैटर्न बहुत, if you compare you will see the pattern has changed a lot. Like in the previous questions you were able to at least attempt the questions. I mean, तो सवाल करने के बाद आपका नॉलेज तो मेरे हिसाब से थोड़ा बढ़ा ही होगा, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू इवन अटेम्प्ट दीस क्वेश्चंस राइट नाउ बिकॉज दिस आर कंप्लीटली फैक्चुअल बेस्ड ना, फैक्ट बेस्ड है। जैसे आप इसको नहीं कर पाएंगे। इफ यू नो द आंसर यू नो द आंसर, इफ यू डोंट नो द आंसर यू डोंट। ठीक है, इसके लिए लिख लीजिएगा aspargine जो होता है, दिस इज इट कंटेन्स ओनली वन NH2 ग्रुप, वन के बारे में। ठीक है, all of the others like for example arginine हो गया, चाहे histidine हो गया, या फिर हम lysine, they have other basic groups also। ठीक है, तो दैट इज वाई यहाँ पे आपके पास एस्परजीन में ही सिर्फ ऐसा होता है जिसमें एक बेसिक फंक्शन ग्रुप होता है, एंड इंस्टेड ऑफ लाइक डबल बॉन्ड N और NH2 ग्रुप, इट द एस्परजीन इट इज गोइंग टू हैव CONH2 ग्रुप। ठीक है, अमाइड होता है इसमें। है, मूविंग ऑन, ट्राई दिस। ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर चाहिए। ग्लिसरॉल्डिहाइड का हम वापस स्ट्रक्चर बता देते हैं। दिस इज लाइक दिस, you have CH2OH प्लस है तो OH यहाँ पे होगा एंड H यहाँ पे होगा, एंड you have CHO, glyceraldehyde। You have to do HCN, this is nucleophilic addition reaction, क्योंकि aldehydes पे होता है। then you are using water, उसके बाद आप क्या यूज कर रहे हैं, HNO3 यूज कर रहे हैं। try this, ये मतलब हो जाने लायक है, थोड़ा हो सकता है इसका। I will give you guys 2 minutes।
थोड़ा सा भी नहीं हुआ क्या आप लोग से देखिए। सबसे पहले क्या है आपके पास HCN है, राइट। तो HCN का रिएक्शन किसके साथ होता है, इट इज गोइंग टू हैपन विद द कार्बोन सॉरी द एल्डिहाइड ग्रुप। CHO है आपके पास ना, उसके साथ होगा। तो CHO को थोड़ा सा हम बड़ा करके बनाते हैं। CHO इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, C बैंड, C डबल बॉन्ड O, और उसके बाद यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। सो HCN से CN आएगा, CN negative, it is going to attack on this carbon atom. Up now, see the main important part that is going to happen here, that is the stereochemistry जो यहाँ पे ये पूछना चाह रहे हैं। Now this is what this carbon atom, it is sp2 and it is going to be trigonal planar. As the CN is going to add here, this bond is going to break and it is going to be now in a tetrahedral position. अब tetrahedral जब होगा तो दो possibilities है, either the O will be in the right side or it will be in the left side, ठीक है। So यहाँ से आपके पास दो प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट में अब नाउ यू कैन सी दैट यू हैव 1 2 3 कार्बन, यहाँ पे एक फोर्थ कार्बन आ गया। सो यू विल बी हैविंग टू कार्बन लाइक दिस, CN यहाँ पे आ गया एंड OH OH H और यहाँ पे CH2OH, ठीक है। दूसरा आपके पास दिस विल बी सेम, या क्योंकि द लास्ट कार्बन एटम इट इज नॉट गोइंग एनी अंडर इट इज नॉट अंडरगोइंग एनी चेंज, CH2OH एंड यू हैव, और इस केस में यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे, ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू बी CN। अब उसके बाद दे आर डूइंग एसिडिक हाइड्रोलिसिस हियर, बोथ द CN मॉलिक्यूल्स जो भी यहाँ पे CN है दैट विल बी कन्वर्टेड टू COH, कार्बोक्सिलिक एसिड वो चेंज हो जाएगा, राइट। सो यू हैव स्पीड चाहिए होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, this will be COOH, this will be CH2OH, this will be OH and OH। यहाँ पे आपके पास HOH CH2H, and this will be OH and this will be H and this will be COH, ठीक है, this is CH2OH। Then they are doing what, HNO3, HNO3 से क्या होगा, you will be having oxidation। तो किसका HNO3 से किसका ऑक्सीडेशन होगा, HNO3 is an oxidizing agent, किसका ऑक्सीडेशन होगा आसानी से, अरे बोलो भाई, no idea। HNO3 is going to oxidize what, the primary alcohol। सेकेंडरी अल्कोहल को नहीं कर पाएगा बिकॉज सेकेंडरी अल्कोहल इज डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, जो कि ये दोनों है। अब आपके पास जो कंपाउंड आएगा दिस गोइंग टू हैव COH इन द टॉप एंड बॉटम, here you will be having OH, here you will be having OH, here you will be having H and here you will be having H। अब यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका COH, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे COOH। Now the question is asking the products found in the above reactions are, now you have to check whether it is going to be optically active या optically inactive, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, ध्यान देखिए। If you look at this compound here, look at this compound here, यहाँ पे अगर हम इससे रोटेट करें, ठीक है, ऑक्सीजन COH and then H, ठीक, and यहाँ पे if I have to do then I have to go this, उसी से इफ यू आई मीन ये आपको शायद अभी नहीं पता होगा, RNS नॉमेनक्लेचर होता है, ठीक है। अब बस आप यहाँ पे इस चीज को याद देख लीजिए, बोथ ऑफ दीज आर अंडरगोइंग, द दोनों उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना। एक आपके पास दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज। वॉट एवर रोटेशन इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस कार्बन एटम, it will be cancelled by this carbon atom, that is why this is going to be optically inactive, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें देन आवर फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी ऑक्सीजन एटम जो यहाँ पे है, COH and then H। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम बात करें तो इट इज गोइंग टू बी सबसे पहले ऑक्सीजन वाला, फिर उसके बाद COH, उसके बाद H। इफ यू सी बोथ ऑफ दीज आर व्हाट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड यहाँ पे एक और चीज, एक और रीजन है, यहाँ पे OH है, आई मीन ऑल द ग्रुप्स आर सेम, सो वट एवर ऑप्टिकल एक्टिवनेस इट इज प्रोड्यूसिंग दिस कार्बन एटम विल बी बिकॉज ऑफ OH COH एंड हाइड्रोजन। मे बी इसको मान लेते हैं आपके पास ऐसे प्लस होगा, ठीक है, राइट वन +30 डिग्री,
तो यहाँ पे -30 डिग्री होगा. वाई -30 डिग्री? बिकॉज ये द ओनली रीजन इज नॉट दैट इट इज क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. ऑल्सो वन मोर रीजन इज दैट यहाँ पे जो एंटी क्लॉकवाइज है दैट इज बिकॉज ऑफ ओ एच सी ओ एच. यहाँ पे जो क्लॉकवाइज है दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ ओ एच एंड सी. तो अमाउंट ऑफ डेविएशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन विल ऑल्सो बी द सेम. ठीक है, बस एंगल में चेंज, मतलब सॉरी, बस साइन में चेंज होगा, राइट और लेफ्ट में चेंज, डायरेक्शन में चेंज. ठीक है, एंड यहाँ पे क्या होगा, बोथ ऑफ दीज नॉट do we practically active. ठीक है, बट दिस ईयर दे हैव नॉट आस्क्ड दिस क्वेश्चन. नहीं उन्होंने सजेशन दिया, लेकिन बट प्लीज राइट इट. Plus and minus it is just a number. We don't know. We cannot determine also theoretically what will be the degree of deviation of plane clockwise light. Optical activity का एंगल क्या होगा उसके बारे में भी हम लोग को नहीं पता. Theoretically at least we cannot say anything. Hope you have writing this down. आप लोग का कल there are two students who are having examination tomorrow, ना? मारिया का है 5th and तारीफ. मारिया and तारीफ are having on 5th. शाहिद का 9th है, मध्या 8th एंड याद आपको फिर 6th को है. Fine. So those who are going to give the examination tomorrow, all the best first of all, और especially Maria and Tarif, ध्यान सुनिएगा. कैसा है आप लोग का जरा बताइएगा. मारिया एंड टेल मी हाउ इज योर प्रिपरेशन. फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ठीक है, 10 इज द बेस्ट, 0 इज द, यानी 0 तो वर्स्ट है. आप बिटवीन दीज टू बताइए. केमिस्ट्री, हाउ वेरी विल यू रेट इट? यस मारिया, मैं ऑडिबल? अब अपने प्रिपरेशन Yes, sir. को कहाँ पे, जस्ट टेल मी, where will you rate chemistry? 0 to 10, 1 to 10? I'll give it a 7. 7. Physics, 6. maths, 5. Yeah, 5. अरे भाई. ठीक है. So in that case you will have to do at least, I would say, देखिए केमिस्ट्री ही ऐसा है ना, इस साल जो हमने देखा जिसमें थोड़ा सा आप कर सकते हैं, तो केमिस्ट्री में थोड़ा सा यू कैन हैव अ लिबर्टी. आप लोग ट्राई कीजिए कि 10 प्लस तो कम, 10 से 15 आई वुड से. ठीक है ना, कि केमिस्ट्री में आप लोग करके आ सकते हैं. 25 में से 10 15, 10 तो हो सकता है ना, 25 सवाल होते हैं ना, मतलब 10 कम से कम आप कर सकते हैं. ठीक है, 15 विल बी ए वेरी, मतलब क्रैश कोर्स से ही सिर्फ अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं देन इट विल बी वेरी, मतलब लंबा चीज, लंबा जंप हो जाएगी. 15 सवाल आप बिल्कुल एक्यूरेटली सही सही बिल्कुल करके आए, लेकिन 10 सवाल बिल्कुल सही आपके हो सकते हैं. ठीक है, देन यू हैव फिजिक्स में आप कम से कम एम करें कि 6 तो नहीं, आई वुड से 7 से 10 के बीच में कम से कम होना चाहिए. 7 to 10 क्वेश्चन. और मैथ्स में जैसे आपने 5 का है तो मैथ्स में
इतना ट्राई कीजिएगा आप। 5 to 7 क्वेश्चंस यू कैन ट्राई फॉर मैथ्स, लेकिन केम पे फिर आप ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है ना। व्हाट अबाउट यू तारीफ, टेल मी, कैसा है आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स, जरा बताइएगा। हाउ वुड यू Chemistry रेटेड? 8, chemistry 8, physics 6, maths एंड मैथ्स? 5. लेकिन एक चीज और है, मतलब केमिस्ट्री इज गोइंग टू बी इजी, तो जो सब्जेक्ट आसान आता है ना, तो जनरली उसमें आपको ज्यादा स्कोर करना पड़ता है टू गेट अ हाई परसेंटेज। एग्जांपल, हाई का मैथ्स में समवेयर अराउंड 99.8 परसेंटाइल आया था, एंड दिस वाज ओनली बिकॉज ऑफ हिज मैथ्स। मतलब हम आपको बता रहे हैं, तो ओवरऑल उसका परसेंटाइल था फिर 91 परसेंटाइल था, ठीक है। और मैथ्स का परसेंटाइल था उसका 98 या 99 के करीब था परसेंटाइल। एंड देन केमिस्ट्री में तो उसमें क्या क्या था हम आपको बताते हैं। केमिस्ट्री में वो सारे ऑप्शन, ठीक है, उसको केमिस्ट्री नहीं आती, छोड़ देते हैं उसको। फिजिक्स इसका ओके ओकेश टाइप का था, तो फिजिक्स में आई थिंक समवेयर अराउंड, फॉर मैथ्स, फिजिक्स में सब कुछ तो हमको लगता 64 के करीब कुछ था, 64 या 74 ऐसे कुछ था। केमिस्ट्री में इट वाज अप्रोक्सीमेटली 50 परसेंटाइल, ठीक है। मैथ्स में, सॉरी, मैथ्स में 98 था, ओवरऑल इसका 91 था। सो यू कैन सी ओनली बिकॉज ऑफ मैथ्स परसेंटाइल बहुत ज्यादा ही हो गया है ना। तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इफ इट इज वेरी इजी ना, तो फिर आप ऐसा डरिएगा मत से, अगर आपको आंसर्स आ रहे हैं फिर आप मैक्सिमम करते जाइएगा, है ना। ऐसा नहीं कि मतलब हमने अप्रोक्सीमेटली कहा था कि आपको 27 सवाल करने, यू हैव टू डू एटलीस्ट 27 क्वेश्चंस, राइट। हमने यहाँ पे अगर ऐसे देखा ना, देखिए, तो आपके पास 9 3 सा 27, दैट इज द मैक्सिमम आई सेट कि आपको करना है वहाँ तक। और यहाँ पे अगर हम देखें 10, और मिनिमम लिया है इसका हमने केमिस्ट्री का, 10 और 7 कितना हो गया, 17, 17 और 5 आपके पास लगभग 21। अगर आप केमिस्ट्री में 10 से ऊपर चल जाएंगे तो 27 टच कर जाएगा, फिर वो CIWG वाला कैटेगरी में आपके एडमिशन हो सकते हैं, ठीक। तो सिंस, व्हाट अबाउट अदर्स, बाय द मदीहा, कैसा प्रिपरेशन है आपका? ये PCM कर रहे हैं, PCM, So I'll say on क्या 7. बताइए आप, ऑल सेट? Yeah, फिर my क्या ही JEE बोले is on आपको, ठीक 8. है। हाँ, ये JEE आपने सबको 7 रेट किया ना, याद। ये तो मतलब मेरे ऊपर प्रेशर आ जा रहा है जब आप लोग केमिस्ट्री को ज्यादा रेट कर रहे हैं ना। क्या केमिस्ट्री अगर थोड़ा सा इधर उधर आ गया, बिकॉज यू हैव सीन द क्वेश्चंस, केमिस्ट्री इज जनरली इट इज So, क्वाइट इजी। सही so है। I didn't rate my preparation. रेटेड दिस बताइए। No, I'm saying I'll rate it on 7. My J is on 8. यू विल रेट इट ऑन 7? आज नहीं, Yes. अच्छा No. ठीक है, फाइन। आई थिंक वी विल बी हैविंग सर्टेन क्लासेस, मतलब जब तक 9 तक है ना, ये गेस शायद 9 तक क्लासेस हैं, दैट इज व्हाई आई हैव बीन टोल्ड कि बच्चों का 9th, हाँ शाहिद का 9th है ना। हाँ, तो 8 तक हमारे पास क्लासेस होते रहेंगे, तो जिन लोगों का जब तक एग्जाम है, तो चलिए खैर ठीक है। और बताइए, तो याद ने बता दिया है, याद इज लाइक 5 मैथ, अच्छा फिजिक्स और कम है, हिस्ट्री में 7 है। फिर भाई आप लोग केमिस्ट्री करके आइए पूरा 25 के 25। तारीफ, तारीफ का हो गया। शाहिद, टेल मी, यस शाहिद। Chem 8, physics 6 and maths 4, ठीक है। तो इन द लास्ट फ्यू डेज हम तो यही कहेंगे फिर तो, आप लोग फिजिक्स, सॉरी केमिस्ट्री और ज्यादा पढ़िए, बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चन जब आपको केमिस्ट्री में ही करने। हाउ, चलिए कौन सही से बता सकता है फिजिक्स के किस तरह सवाल आ रहे हैं इस दिस इस आई मीन दिस ईयर। I mean, for example, in the complete crash course of chemistry, I have always compared chemistry 2024 January February
एंड केमिस्ट्री 2024 से पहले का, एंड आई हैव ऑलवेज शोन यू द डिफरेंस कि मतलब कितना दोनों में डिफरेंस आ चुका है. इज इट द सेम इन फिजिक्स एंड मैथ्स आल्सो? फिजिक्स का बताइए, मैथ्स का छोड़ दीजिए, फिजिक्स का बताइए मारिया. Yes, sir. This year's physics was comparatively easier than the previous years. अच्छा, देयर वाज अ मतलब बिल्कुल सिग्निफिकेंट कंपैरिजन जिस तरह केमिस्ट्री में उस तरह किया जा सकता है फिजिक्स के लिए. एंड व्हाट अबाउट मैथ्स? मैथ्स आई थिंक वो लोग लेवल चेंज नहीं कर रहे होंगे, आई होप सो. व्हाट अबाउट मैथ्स? किसी को आइडिया मैथ्स के बारे में? ये बिल्कुल ऊपर से आ रहा है. नो आइडिया. मारिया, एनी आइडिया अबाउट मैथ्स? मैथ्स के बारे में किसको आइडिया? नो आइडिया अबाउट मैथ्स. मैथ्स नहीं कर रहे थे क्या आप क्रैश कोर्स में? अच्छा, फॉर मैथ्स पीवाईक्यू वाज नॉट डन और व्हाट? तारीफ बताइए जरा. No idea. क्यों? यू गाइस वर डूइंग ना मैथ्स क्लास? Yes, sir. But I think we just did the questions. You just did? Questions. Not sure if it was PYQ or not. So you're not sure it was PYQ or not? Yeah. चलिए खैर ठीक है. बस see, कल जिन लोगों का है PYQs, but the questions have to be same level, hard to meet. ठीक है मारिया. तो बेसिकली ना देखिए, व्हाट आई थिंक होपफुली दिस मे बी ट्रू, तो फिर हमको बहुत प्राउड फील होगा अपने आप में कि देयर वाज अ वेरी notification regarding NTA combining JEE and NEET. I think they are going towards this direction itself, because जब JEE और NEET होगा ना, then this will be, I don't know what this test will be called.